शुरू हुई इस प्रकृति समता का जो कुछ लोग शोषण के हिसाब से इसको अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया, वहीं से गड़बड़ शुरू हुई। कलयुग के अंदर जो शोषण हुआ नेचर का और जो नेचर से हटके, उन चीजों को ठीक करना ही गुरुदेव का काम है। क्योंकि गुरुदेव के हिसाब से, कल्कि के हिसाब से वो सबका मालिक है। तो उनकी व्यवस्था यह है कि जितने सारे संसार के लोग हैं, वो जो नेचर संपदा है उन पर सबका अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कुछ गुणे चिन्हों का लोगों का नहीं, सबका अधिकार है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की जो व्यवस्था थी, सनातन की जो व्यवस्था थी, वो जो अपने संपत्ति की बात की थी, बोटनी की बात की थी कि लोग उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती, शोषण नहीं होता था। ये शोषण की जो चीजें हैं ये हिंदुस्तान की नहीं, ये बाहर से आई हुई चीजें, काल धर्म के कारण से हुआ और उसके अंदर विकार आया, उसके अंदर विकार आया। आप अनुवाद करें फिर अपने बात करें। Okay, so now in a way we are starting this session again. ये सेशन अब दोबारा से शुरू हुआ क्योंकि एक गलत बटन दब गया, तो उसकी वजह से, but we'll start from here. Bhavar Singh ji is, had mentioned while we were recording the, session earlier, and he had mentioned a few things about the purpose of coming of Avtara, and in summary, he explained that the purpose is to cure the nature as well. It's not only about human beings to be cured through yoga, but the entire nature to be cured, which has been deteriorated due to several reasons. And he had explained the internal and external structures of both the systems. The theory of whatever is in within our body is in universe, and whatever is in universe is within us. So changing and correcting the entire universe, and method may be anything. And he also mentioned about the word Pratham Ganesha, which has a meaning that that is related to the earth element, and that is like a gate man, which is monitoring who comes in and who goes out. So that is the work. And he also mentioned about this internal structure of our body, that this meditation is related to the awakening of Kundalini, and Kundalini moves upwards with a force. So that force resides between sacrum and the navel area, the belly button area, and that area is filled with one of the airs that is called Apan Vayu, which is responsible for all the discharges we have from our body, either it is the birth of a child or secreting, just going toilet and urination and all, and related to the reproductive work. So that Apan Vayu, which is a sort of air, but gets converted into the fire element in the first place, and it goes below the Kundalini, so that Kundalini can move up, like the Chandrayaan moved up with the the Chandrayaan rocket moved up because there was a fire under that rocket. So that kind of structure existed. So Kundalini moves up through the Sushmana, and that Sushmana is filled with a lot of sanskaras, so to speak, and it cures. Kundalini, keeps on curing, and it makes us healthy. So while narrating all these things, he also mentioned about that in 3 yugas, nature has been in the first 2 yugas, like Satyug and Treta. This has not been compromised that way, that nature was respected and nature was not distorted by human efforts and all. But while you can observe through the history that in Dwapar, nature also changed. When Lord Krishna left his mortal body, so his palace or city actually got merged into water or into the ocean, and
all these rivers changed their direction or their routes. Even one of the rivers, which is called Saraswati, there are three, Ganga, Yamuna, and Saraswati, there are three rivers. So Saraswati actually got disappeared during that process. So when Lord Krishna left his mortal body, it is mentioned in the history that there was a huge earthquake and that had changed the course of nature that way. So the coming of Avtara is primarily is to completely correct or align the entire universe, which lost its flow because of several reasons created by the negative energies. So what he had said now is that in Kali Yuga, the era of falsehood or the Iron Age we are living in, we have actually departed too far away from the nature. And the negative energies or shaitan we speak had actually uh, destroyed the nature, have manipulated the nature, have exploited the nature. The nature which was created to help human being to survive and live here was compromised, and that was just because of the some of the people who have hidden motive or their ulterior intentions, and their for their own benefits they have compromised with the nature. So by doing so, human being is going away, much away from nature. And now Gurudev is here to not only correct human beings but also correct the entire universe. The exploitation which is happening in the falsehood, in the age of falsehood, had not happened that way in the past, because nature was regarded as one of the deities or gods. But these external interventions, particularly the invaders coming from outside, have actually exploited all this nature. Yes, sir. Now you can speak. कहने का ये रण जी की जैसे ये माँ कुंडली शक्ति हमारे शरीर में एक जैसे जैसे आगे बढ़ती है ठीक करती जाती है, इसी प्रकार ये कल की अवतार की सत्ता जो ये नेचर से इस पृथ्वी पे जो विकार आए हैं उनको ठीक करने के लिए मैं छोटी छोटी बातें, ज़्यादा तो नहीं पर मैं बात बताना चाहूँगा कि गुरुदेव कहते थे हांडी में से एक चावल देख लो कैसा है तो सारे चावल वैसे ही है। ठीक इसी प्रकार ये जो विकार इस पृथ्वी के जो पृथ्वी तत्व में जो विकार आए, उसके लिए जो पिछली बार बात कर रहे थे उस टाइम मेरे को नाम याद नहीं आया था, जो बोटनी का जो वैज्ञानिक था हिंदुस्तान का, वो बहुत बड़ा संत भी था वैज्ञानिक भी था, उसका नाम था जगदीश चंद्र बसु। उसका वर्णन योगानंद ने किया ही किया है। उसका वर्णन जो एक पिछले सालों में एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, एक राजीव दीक्षित करके थे, और उन्होंने इतना काम किया कि 1000 वैज्ञानिक मिलके 1000 साल तक काम नहीं कर सके, उतना काम उस बंदे अकेले नहीं किया और हर साइड में किया, एक साइड में हर साइड में किया। तो जगदीश चंद्र बसु की जो बात आती है, उन्होंने बोटनी में तो किया ही किया था। वो हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, पर उसकी थीसिस दबा दी गई और रेडियो का आविष्कार जो है उसका श्रेय मार्कोनी को दे दिया, जबकि सही मायने में वो श्रेय सुभाष चंद्र बोस इसको जगदीश चंद्र बसु को जाना था। इसी प्रकार राजीव दीक्षित ने ये भी अपनी शोध में ये पाया कि जो ये हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये राइट बंधुओं को नहीं मिला, बाद में मिला है। इससे पहले गुजरात के अंदर कोई साइंटिस्ट था बंदा, उसने प्लेन उड़ा के दिखाया था और डेमो रखा था, और उस डेमो में बाहर, क्योंकि उस टाइम गुलाम था तो बाहर से लोग भी आए थे और कोई अंग्रेजी कंपनी के साथ अनुबंध हुआ, और बाद के अंदर उस आदमी को षड्यंत्र करके किनारे कर दिया गया और ये सारे डॉक्यूमेंट सारी शोध वहाँ ले गए और
अपना नाम दे दिया। ये है वह हिंदुस्तान के साथ, ये वह हिंदुस्तान के साथ। Okay, so Bhavar Singh is mentioning that the coming of Kalki Avatar is giving a sort of hit in a way. And Gurudev used to say that when you are boiling rice, you just take one piece of grain of rice and test, just check whether it is you know cooked or not. You don't need to look at all the pieces of rice to see whether these are cooked or not. Similarly, uh, we can figure out from all these ailments we see nowadays that what is behind this. And then these ailments or these problems or kind of deterioration in the earth element, Bamar Singh ji is mentioning about that. And he's mentioning that he forgot the name of that scientist. He referred to last in the last episode, and his name is Jagdish Chandra Basu. And this name is also mentioned by Yogananda, Swami Yogananda. And also, this was referred, or he had been quoted by another Swadeshi movement kind of leader, Rajiv Dikshit. Rajiv Dikshit himself was, more capable than thousands of people, and he did kind of, created a movement for Swadeshi in India. And Bhavan Singh is mentioning that, originally J.C. Bose, Jagdish Chandra Basu, was actually involved in, invention of radio. Yet that patent was given to Marconi. However, he was involved in that patent. Similarly, Rajiv Dikshit had mentioned, he's referring to Rajiv Dikshit for that matter. He's not saying with any other source of reference, but he is saying that even aeroplane, which is the copyright or the Wright brothers are considered to be the inventors of aeroplane, was actually similar work had been done in Gujarat in India while India was not independent. And the demo was also organized, and a lot of people were supposed to come from abroad, and they had seen that yet all that research, all this all the work done by this Gujarati or Indian people was taken away, and it was converted later on. And now people know that this research was done by Wright brothers. Yes, sir. तो धर्मेंद्र जी अपने जो बात कर रहे हैं, जो महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये जो भारत की भूमि है, ये अवतार का घर है, बाकी जो है पैगंबर गए हैं, तो इसको अगर हम वहीं वापस नेचर के हिसाब से देखते हैं तो धर्मेंद्र जी ताजुब करोगे आप। मेरे कई बार ये कई दिन चला था ऐसा कि हिंदुस्तान की जो, जैसे हिंदुस्तान का नक्शे को खड़ा कर दो तो जैसे वो कन्याकुमारी में जैसे उसके पैर हैं और हिमालय जैसे उसका मुकुट है, इधर द्वारिका और इधर जगन्नाथपुरी जैसे उसके हाथ है। तो ये जो नेचर ने जो चीज दी है, ईश्वर का घर कैसा होना चाहिए, ये जो हिंदुस्तान को नेचर ने जो 6 प्रकार की ऋतुएं होती है और जो ये हिमालय जैसा मुकुट दिया है, वो नदियां झरने, ये सारा का सारा जो दिया गया, ये एक दुनिया के अंदर कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान का, कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान। कहीं 6 महीने रात होती है, कहीं 6 महीने दिन होते हैं, कहीं 6 महीने बर्फ पड़ती है, कहीं 6 महीने तूफान चलते हैं। ये सारा नेचर के हिसाब से कुछ नहीं। जो हिंदुस्तान को विभिन्नता दी, और खाली विभिन्नता ही नहीं, नेचर के हिसाब से जब इतनी ऋतुएं होती है, अलग अलग जगह अलग अलग ऋतुओं में फल फूल आते हैं,
तितलियां होती है, पक्षी होते हैं, जो वो एक तरह का म्यूजिक होता है। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में अवतार का घर है वो हिंदुस्तान है, ये भारत भूमि है जहाँ अवतार होता है। और अवतार में जो चीजें होनी चाहिए नेचर के हिसाब से, जैसे एक तितली होती है, उसकी जो कौन पेंटर होता है जो उसके विभिन्न चित्रकारी करता है, ये है नेचर, ये है ईश्वर की व्यवस्था। ये कहीं नहीं मिलेगी, इसी भारत भूमि पे ही मिलेगी, इस भारत भूमि पे ही मिलेगी। तो कहना का ये है, अगर भारत को इसी तरह नहीं बनाया जाता, हिमालय नहीं होता, तो जो उत्तरी ध्रुव से जो तूफान आते हैं ना, उस भारत भूमि पे ही आते, कन्याकुमारी तक आते। न तो यहाँ ये नेचर होता, न ऋतुएं होती, कुछ नहीं होता। इसीलिए भारत को जो है भगवान का घर बनाया गया, स्पेशल घर बनाया गया। उसी घर के अंदर अब कल की अवतार आए हैं, तो उस घर के अंदर सुधार शुरू कर दिया गया है, सुधार होगा। अब आप अनुवाद करें, फिर बात करें। Okay, so now Bhamar Singh is trying to depict a picture which is very beautiful about India. As Maharshi Arvind had also mentioned, that India is a place of these avatars. All other places are the places where prophets or messengers of God have born, whereas in India avatars have born. So this is very interesting. And Bhamar Singh Ji is mentioning that for quite some time he had been amused or surprised to see the map of India, where the Himalaya is like head or the crown of India, and the Kanyakumari is the feet, where the ocean is actually cleaning the feet that way. And if you compare the nature or environment in other parts of the world, it's not so congenial or not convenient. In some places there is night for 6 months and day for 6 months, and a lot of natural calamities happen. What you call that, typhoons keep on coming. And if Bhamar Singh Ji is mentioning, if there was no Himalaya, then all these the natural disaster coming from the northern side would have actually destroyed even up to Kanyakumari. So this has been created like a rock, the head, and it is protecting. And look at the diversity of nature in India. Look at the seasons of India. Look at the type of fruits in India, the butterfly, the music, and whatnot. All that proves that the home of God or Avtara should be like that only. Now he is also amazed that, can anyone tell who is actually coloring the, the wings of butterfly? Isn't it the creation of the God that way? So this is what, a place where Kalki Avatar has born in India, and he is here. That's the true home of the Avatar, that so to speak. तो धर्मेंद्र जी जो बात कहने की है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे, तो किसी ने वहां पूछ लिया कि स्वामी जी तुम इतने इतने लंबे भाषण मार रहे हो, ऐसे ऐसे कह रहे हो, हमारे ऐसा था, हमारा सनातन ऐसा था, हमारा सनातन ऐसा था। तो उसने क्वेश्चन किया कि तुम्हारा सनातन ऐसा था, द्वापर में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, सतयुग में ऐसा था। तो उसने पूछा, भी जब तुम्हारा ऐसा था तो हम कैसे थे? तो स्वामी जी ने उसको जवाब दिया कि जिस टाइम इंडिया क्लाइमेक्स पे था तो तुम कैसे थे? वो कहते थे तुम्हारे पहनने के कपड़े नहीं थे, तुम जंगलों में घूमते थे और
जैसे वो आप होते हैं ना आदिवासी लोग ढाक के पत्ते लगा के घूमते, तुम वैसे थे। ये जवाब दिया, ये जवाब। तो कहने का ये है, आज जो गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया है मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के बीड़ा उठाया है, तो ये खाली गुरुदेव जो है सनातन के लिए ये नहीं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान में ही है या कोई एशिया महाद्वीप के नहीं है। गुरुदेव का जो है मानव मात्र के लिए मैसेज है, मानव मात्र के लिए। क्योंकि गुरुदेव की ऐसी व्यवस्था है, जो आज तक जो आए हैं मैसेंजर आए हैं, वो अधूरे थे, वो पूर्ण नहीं थे, अधूरे थे। उन्होंने वासुदेव कुटुंब की बात नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ अपने ग्रुप को मजबूत करने की बात की। चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहा है मेरा ग्रुप मजबूत है, वो कह रहा है मेरा कबीला मजबूत है। कबीले तक सीमित थे वो लोग। वासुदेव कुटुंब की बात तो इस सनातन धर्म इस भारत भूमि पे करता है, वो जो आजकल की बात कर रहे हैं। आप अनुवाद करें फिर बात करें। All right. So this is another dimension Baba Singh is mentioning about, and he is referring to Swami Vivekananda when he was in the United States, and he had delivered a lot of lectures around the world, around Sanatan and the Indian culture and Indian dharma and all. And people had asked him that you are talking about that, our Sanatan dharma was like this, and we were, on the top of it in, Satyuga and other yugs. So they had a genuine curiosity or quest, and their question was that if you were on your climax, your culture was, or your religion was, or your dharma was on the climax, we were that time compared to your state. And Vivekananda had said that, your situation was that you didn't even have proper clothes to wear, and you used to live in jungle like, tribal community and all. So something like that. One has to refer to the actual historical aspect of it, and to read certain books related to that. Now, Gurudev had, taken responsibility for all the human beings, irrespective of whether he is Asian or African or American. It's all about everyone. Every human being is considered. And why so? Because all these messengers or prophets, without naming any, were actually incomplete in the sense that they were only related to their own community, or to their own kabila, so to speak. Yet India had always talked about that entire world is my home. Vasudhaiva Kutumbakam is the focus, is the feeling, is the gist of India that way. Okay, so this is a small comparison, not needed yet, but just to highlight what India is offering that way. Yes, sir. मैं क्या धर्मेश जी, ये है कि ये जो आज जो चमक दिख रही है, आज जो पश्चिम जगत सबको दिख रहा है, पर ये जो चीजें हैं, जब हम इतिहास में जाते हैं तो जैसे पुराने टाइम में जैसे लोग एक उत्पत्ति की बात करते हैं, तो पहले पहले जो उत्पत्तियां हुई वो जैसे जैसे नदियां बहती थी, उनके किनारे बस्तियां होती थी, उनको पानी भी मिलता था, उनको जल वहाँ कुछ उपार्जन भी मिलता था। तो पहले जो है जो शहर बसे, जो बस्तियां बसी, वो नदी किनारे बसी। ठीक इसी प्रकार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर तक ज्यादा विकास जो था इस एशिया महाद्वीप, इस भारत के अंदर से शुरू होता है। और जहां आज पश्चिम जो अपना कह रहा है कि हम तो आकाश में पहुंच रहे हैं, उस टाइम वहां कुछ नहीं था, आबादियां ही नहीं थी, कुछ नहीं था। और हुए तो बाद में वैसे वो जैसे जंगली लोग थे वैसे हिसाब से।
कहना का यह है कि हिंदुस्तान के अंदर ये काल धर्म के कारण से डाउन होते होते आज हम नीचे आगे, गुरुदेव ने कहा ना, हर चीज का विकास होता है और फिर डाउनफॉल होता है, तो नीचे तक आता है, फिर विकास होता है। तो जो हम काल धर्म, डाउनफॉल के काल धर्म से गुजरे, उस काल धर्म में गिरते 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 हम यहाँ तक आ गए कि जो मनुष्य, जिसका गुरुदेव ने कहा है कि तू पर है, ईश्वर का रूप है, वो अपना रूप भूल गया। और वो जो है, आप जो देख रहे हैं कि आज के टाइम में आके कि जो जिस आत्माओं की आप भक्ति कर रहे हो, उन आत्माओं के आगे मनुष्य हाथ जोड़े खड़ा है कि तू ही मेरा कल्याण कर सकता है, तू ही मेरा कल्याण कर सकता है। इससे नीची गिरावट हो नहीं सकती, इससे नीची गिरावट हो नहीं सकती। अब गुरुदेव आए हैं और सबको अंदर से जगा रहे हैं कि तुम पर हो, तुम मेरे से जुड़ के देखो, मेरा मंत्र करके देखो, तुम्हारा स्वरूप तुम्हें खुद दिख जाएगा। अनुवाद करें रमेश जी। Okay. So now Bhamar Singh ji is mentioning that whatever, the shining glory of West you see is the current trend that way. Yet India and Asia have developed all these, civilizations had developed near the flowing rivers so that people get livelihood as well. And all these, old cities which are near river were the predominantly, the flourishing cities that way. And Satyuga, Treta Yuga, and even Dwapar had all this, where the civilizations flourished all across the rivers. During that time, there was nothing in the Western world, right? Yet now, because of the downfall of India, due to the negative forces, we can say so, and we have gone to the rock bottom, where Gurudev had mentioned that it is the cycle of flourishing and going to rock bottom as well. But Gurudev had also mentioned that when there is no space left to even go further down, then we bounce back, and then the uttan, or flourishing, starts again. So we are in that age that way. So Gurudev is saying that when we were shown, or we have been promised, that you are God in a way, yet you are being in a physical body, but you are God within. So what happened? The deterioration had gone to such level that human being forgot his or her own nature, the own entity or identity, and is actually going down to all those souls which never got salvation. All these started praying to all these souls and all. Now Gurudev has come again, and is trying to awaken you, shake you from within, to help you realize that you are God yourself. जी सर. जी सर. तो रमेश जी, क्या है कि जो अपने बात कर रहे हैं नेचर से और पृथ्वी तत्व से और उधर माँ पूर्णी शक्ति और हमारा जो चक्रों के हिसाब से, तो जैसे पृथ्वी तत्व गणेश का चक्र आता है, तो स्वादिष्टान चक्र आता है, वो बीज का आता है। ब्रह्मा को क्यों उसको बुजुर्ग बनाया गया है, उसको क्यों बुजुर्ग दिखाया गया है? उसकी ड्यूटी बनती है उत्पादन, मतलब वो बीज, जैसे कोई आजकल होते हैं ना, गोदाम होते हैं, ऐसे गोदाम होते हैं, वो हर एक तरह का बीज लोगों को देते हैं। इसी तरह ब्रह्मा को इस संसार के अंदर उस परा जगत से
बीज का रक्षक बनाया गया है कि बीज संभाल के रखे जो दुनिया के सर्जन में काम आए, बीज संवार के रखे, बीज का सही उपयोग रखा जाए, सही जगह बोया जाए। ये ड्यूटी ब्रह्मा की है, ये ड्यूटी ब्रह्मा की है। ये दोनों चीजें आपस में मिलती है। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी में पहले उसको सुधारा जाए, गुरुदेव जैसे सुधार रहे हैं, नेचर के हिसाब से उस पृथ्वी को लाया जाए, फिर उसके अंदर सही ऋतु के हिसाब से उसमें बीज बोया जाए, जो मानव सर्जन के काम आए, जो मानव सर्जन के काम आए। ये जो आज विकृतियां आ गई, बिना टाइम बीज बोना, उसमें संशोधन करके, वो जैसे इन्होंने पश्चिम जगत ने इसके अंदर कर करके जो नेचुरल बीज था उसको बिल्कुल उससे हटा दिया और अपने एक बिजनेस के हिसाब से उसको उपयोग कर दिया, जबकि सही मायने में तो वो बीज था जो नेचर था। अब आप देख रहे हैं कि जो स्वदेशी का आंदोलन चलाया था राजीव दीक्षित ने, मैं उसकी दो चार छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास को ले नहीं सकते। धर्मेंद्र जी, उसने शोध किया तो उसने पाया कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये माद आदि के नुस्खे हैं, तो उसने कहा कि ये जो मसाला शब्द दिया गया है रसोई का, ये हिंदुस्तान का शब्द नहीं है, ये बाहर से कोई आया हुआ शब्द है, जिन्होंने बाहर वालों ने इसको मेंशन करने के लिखा। वो ये कहता है कि हमारी रसोई में जिसे हम मसाला कहते हैं वो मसाला नहीं है, औषधि है। चाहे वो दाना मेथी हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो दूसरी अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पतियां हो, वो कहता है वो इसी हिसाब से यहाँ व्यवस्था थी कि किस ऋतु के अंदर किस मौसम में क्या खाना चाहिए, बॉडी के लिए क्या सूट करता है। वो ज्ञान अनपढ़ से अनपढ़ यहाँ के जो जीवन चलाते थे उनको था। ज्यादा गड़बड़ ये हुआ है अंग्रेज आने के बाद, पिछले 400-500 सालों में ये गड़बड़ हुआ है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। ज्यादा गड़बड़ तो इसलिए पिछले 100-200 साल में ही हुआ है, पहले था ही नहीं। सारी व्यवस्था हमारे यहाँ थी, वो नेचर से जुड़ी हुई थी। राजीव दीक्षित ये कहता है, एक छोटी सी बात बताऊं आपको, वो कहता है जैसे दाना मेथी लो, वो कहता है दाना मेथी आप उस 5 ग्राम दाना मेथी शाम को भेदो, सुबह उसको पानी पी लो, दाना मेथी खा लो, 40 दिन के अंदर आपकी बॉडी में कैसा ही विकार हो, जैसे इस जमीन पे विकार होता है वैसे हमारी बॉडी में भी विकार होता है। हम जो खाते जा रहे हैं उसमें कई केमिकल आते हैं जो नेचर के हिसाब से गलत होते हैं, पर अगर आप दाना मेथी को यूज करते हो तो वो सारे आपको 40 दिन में वापस वहीं ले आएंगे जहां शुरू किया है। आप अनुवाद करें, बात करें। Okay. So Bhamar Singh ji is now primarily focusing on the earth element. There are 5 elements we are made up of, and earth element has also been compromised that way. And he is saying that there is a need to improve that earth element also. And there are 3 key role players in this universe: Brahma, Vishnu, Mahesh, creator, feeder, and destroyer. So Brahma is responsible for keeping the seed, protected, unless the earth element is completely cultivated, completely kind of prepared or made ready to sow the seeds. Brahma is responsible to keep those seeds intact, right? And coming back to the physical nature, Mama Singh also mentioning that, based on the seasons, we used to have specific seeds sowed in the soil. Now, there is so much of intervention done by the so-called scientists or gene, experts, that they can grow anything anytime. Now, this is a big compromise or big kind of, deviation from the nature's nature. And he is also mentioning again about Rajiv Dikshit. And he had, Rajiv Dikshit had done a research
and found that, there is a term in India that if, anyone gets ill at home, so grandmother, parental grandmother or maternal grandmother gives some sort of treatment at home. So we call it Dadi ka nuskha or Dadi Nani ka nuskha. So Rajiv Dikshit is also mentioning, and Bhamar Singh ji is referring to him, that the word masala, which we use in kitchen nowadays, is not a word which was belonging to India, and it was kind of imported word. And instead, in our kitchens, instead of these masalas, whatever we consume in the name of masala is not a masala but a medicine, like turmeric powder, coriander, and dana methi is one of the names he had mentioned. And which season is good for eating what? So according to seasons, we had all this food habits, and this has also changed now. So this deterioration has come when the invasion of English or British rulers was there for almost 400 years. But more deterioration has happened in last 100 to 200 years, right? All these things which are related to nature have been compromised or have been kind of distorted. Mohan Singh is giving an example of, from the work of Rajiv Dikshit, where Rajiv Dikshit mentions that, if you just take 5 grams of dana methi and you just, put that into a glass of water, soak it for the night, and next day just drink that water and chew that dana methi and continue doing that for 40 days, and all your ailments in the body will be gone, and you will be rejoining the basic nature which was there as given by the God. Yes, sir. So I think आज के लिए इतना ही काफी रहेगा. जी, आज टाइम हो गया या बोलना है? आप इसको कंक्लूड कीजिए बस, क्योंकि पहले जो हमने 8-9 मिनट किए थे वो तो डिलीट हो गए समहाउ, बट अभी आप आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर मैं वो इंग्लिश में जो स्पीच है गुरुदेव की उसका हिस्सा पढ़ूंगा. जी जी, आप कुछ कहना चाहें तो. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमने ये बाहर की बात की है, अंदर के हिसाब से जो गुरुदेव की जो सत्ता है, जो गुरुदेव की व्यवस्था है, जो गुरुदेव वासुकुटेम कुटुम की बात करते हैं, जो मानव मात्र की बात करते हैं, ये बाहर कहीं नहीं है, किसी धर्मों में नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है. क्योंकि गुरुदेव जो कह रहे हैं कि मैं मानव मात्र के लिए वासुदेव कुटुम की बात कर, द्वैत है ही नहीं, सारा मेरा विराट स्वरूप है, द्वैत किससे? आज तक जो बाहर के धर्मों में जो कमियां रही है वो रही है कि उन्होंने कहा हम अलग तुम अलग, हमारी प्रॉपर्टी अलग तुम्हारी अलग, और धर्मों को जो है वो ही मिशनरियों के द्वारा दबाव के लिए. और गुरुदेव की बात है वो है प्रेम की बात है. आज जो गुरुदेव अंदर से बदलाव ला रहे हैं वो ये तामसिकताएं जो आज आ रही है, जैसे वो उस बर्फ के पानी में जहाँ सारा आता है वो सारा उसमें समा जाता है, उसी तरह गुरुदेव के चरणों में जो भी लोग आ रहे हैं, आगे बात हम करेंगे, पर ये जो गुरुदेव ने जो बेड़ा उठाया है मानव मात्र के लिए, आज तक का हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो गुरुदेव के चरणों में आ रहा है, अभी का लेटेस्ट प्रैक्टिकल ये है कि चाहे वो मानव है, चाहे दानव है, चाहे देव है, जो गुरुदेव के चरणों में आ जाता है वो उस प्रेम में डूब जाता है, उस प्रेम में डूब जाता है. ये है गुरु वासुदेव कुटुम की बात, ये है माँ कुरुणी शक्ति की बात.
ये है महाकुंडलिनी शक्ति की बात, जिसको गुरुदेव लेके निकले हैं। और गुरुदेव का ऑब्जेक्ट है कि इस मानवता में अगर शांति आएगी तो अंदर से आएगी, बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। मानव मात्र के अंदर शांति अंदर से आएगी, शांति देने वाला ये अंदर है। बस आज इतना ही बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक? Okay. So, in conclusion, Mamar Singh ji is saying that whatever is being offered by India or the Sanatan, so to speak, cannot be offered by anyone else because they have their limited visions about the God and the nature. And the concept of Advait, that there are no two, or there is only one, is given by Adi Guru Shankaracharya, and Gurudev Ramlalji Siyag is actually, giving a practical of that to everyone, for all the human beings, because the Sanatan believes that entire world is my home. When there is no two, there is only one, then there is no gap or space. So there are no two separate power centers. There is only one power center, and we all are God, and Guru is within us. So he will empower us that way, right? And this meditation, Guru Siyag Yoga meditation, is meditation of love. The feeling of love, being loved, the divine love. And this transformation which is going to happen will not come from outside or not from anybody's lecture or conversation, but it will come from within by chanting the mantra given by Gurudev Siyag, relentlessly chanting the mantra, and we'll play that mantra for you. And anyone, no matter is human being or the deities or the demon, if they surrender in the lotus feet of Gurudev Siyag, then there is a salvation, then there is oneness, then there is no two, then there is only one. And if sustainable peace or permanent peace has to happen, that will happen from within. This transformation of sustaining peace will come from within. This is what Gurudev Siyag has been saying to all of us. So thank you so much, Baba Singh ji, for your insightful thoughts. And now I will just read out the section which is a translated version of Gurudev's speech delivered in somewhere in 2008. And then we will play the mantra in Gurudev's voice, which we have to chant mentally all the time, and do the meditation twice a day for 15 minutes each in the, in hot places like India, and in cold places you can have 30-minute meditation every day. And during that meditation, you can also chant the same mantra. For more details, you can go to gurusiyagyoga.org website. I'll play that for you as well later on. So everything is predetermined. This is an initiation speech by Gurudev Siyag, and just reading the next part of it. So Gurudev says, so look at Guru here on the Ajna Chakra and continue chanting the name. You have no duty beyond this. What will happen now if that mantra is enlightened? See, in your system, the wires are there. All the fittings are like electricity. Everything is fine there. And connection must be taken from the wire which has the lights or the current. So it won't take time for it to be electrified or get electricity within you. There is no use in taking connection from a wire which has no current. So the personality from whom you are taking initiation should be enlightened. Then you will get the result. Otherwise, keep on going to Guru, keep offering the money. You will get blessings, and that's the end of it. So here on Ajna Chakra, concentrate your mind here and start chanting the mantra. Now, because the mantra is enlightened, it will awaken your Kundalini. There is a lot of rumors spread around about Kundalini
that practitioners will go mad or he will have heart failure. Whereas, on the other hand, our philosophy says that when Kundalini gets awakened and reaches to the crown chakra or Sahasrara, that is called salvation. Then how will we get salvation without awakening Kundalini? How will you experience it? Without walking the Kundalini up, without waking the Kundalini up. Tell me. Yes, she is the mother of universe and she should be treated accordingly. If you temper Kundalini with the Hatha Yoga, you will fall ill. This is true. This is fact. So by this mantra, which I'll tell you, your Kundalini will be awakened. Potent force lies dormant at the base of the spinal column in every human body. Because it is coiled around the base of the spinal column in 3.5 spiral, the ancient sages called it Kundalini, the coiled one, like a snake. Only the human being can awaken in the human body because it is in the mature state or stage. The rest of the species are meat for enjoyment or just, eating and going. They go away after enjoyment. Now, the man is standing at the crossroad. Either he ascends and attains salvation. If he goes down, then there are 84 lakh, 8.4 million births again. So meditate here on the Ajna chakra. If mind does not stop, then chant the name relentlessly. So that is the part of speech delivered by Guru Siyag, and it has been translated. Not a very good translation, I would say, but at least there is something someone can get from this. Now we'll play that mantra in Gurudev's voice, and there is a little speech by Gurudev himself, and then we will wind up this session and surrender ourselves and, just leave this episode in the lotus feet of Gurudev Siyag. What does yoga mean? Yoga means a union of the soul with God or the universal consciousness force. What are the benefits of Siddhi Yoga? Siddhi Yoga heals, cures, or frees the body from any physical illness, aids various forms of cancers, diabetes, arthritis, asthma, and even genetic disease like hemophilia. In the case of disease such as AIDS, which attacks the entire body, the patient may experience internal kriyas like sensation or heat, electricity or tingling. According to Siddhi Yoga philosophy, the divine power awakened by an enlightened Guru gets transmitted through his blissful voice to the listeners, irrespective of language spoken by the Guru. This divine power transmissions occurs smoothly and remain unaffected by the language being used. A regular practice of Siddhi Yoga strengthens the immune system. The Kundalini acts as a protective shield of the immune system and wards off the onslaught or recurrence of any disease. Impact of Kundalini awakening. The Kundalini makes the practitioner perform kriyas that are specific to his needs. With this cleaning, the practitioner is cured of all kinds of chronic and even terminal disease such as HIV, AIDS, cancer, arthritis, etc. and genetic disorder like hemophilia. Mental application too are completely cured and stress is completely relieved. Cling, Krishna, cling, 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 cling, Krishna, cling,
Kling, Krishna, Kling, 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 Kling, Krishna, Kling. All right, so we now complete this session and leave this in the lotus feet of Guru Siyag, and hope we will have next session next week soon. Jai Guru. Jai Guru. Jai, jai.